Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So this will most likely be the last lecture this semester on the topic of the Bayes theorem. Basically इस lecture में सिर्फ हमने कुछ चीज़ों को conclude करना है, some final thoughts हैं, some afterthoughts हैं चीज़ों के बारे में. We'll be quickly reviewing the way we have been talking about the hypothesis space and the hypotheses and the difference between the various types of hypotheses या age को जो कुछ हम समझते रहे हैं. We'll also be talking a little bit about the frequentist view of probabilities, the Bayesian view of probabilities, and how these two come together, how they are different from each other, how they are similar to each other. इसके साथ साथ we'll also be talking a bit quickly about the Bayes optimal classifier जिसकी हमने अलग से अब तक बात नहीं की थी. So with that we'll be concluding the topic of the Bayes theorem and the generative algorithms, although कि हमारे अगले algorithms में फिर हम generative का जिक्र करेंगे जब हम HMMs पढ़ रहे होंगे तो we'll be dealing with generatives once again. But to conclude it as a topic at this point, हम इस लेक्चर में ये सारी चीज़ों को देख रहे होंगे. So let's do that now. So these are some of the references that I'll be using in this lecture. इस lecture में थोड़ा सा एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि इसको यानी मैं एक ख़ास level of detail में cover कर रहा हूँगा, लेकिन यहाँ ये मकसद भी है कि आप लोगों में से जो लोग इन चीज़ों को मज़ीद तफसील से पढ़ना चाहें उनके पास इतना मटीरियल हो to get you started in these directions. So there are a lot of things here from various sources. So there are lecture notes from this machine learning for intelligent systems, ये कॉर्नेल में प्रोफेसर वाइनबर्गर के ये लेक्चर्स हैं. एंड देन रॉनी रोजेनफेल्ड की इनकी वीडियोस तो सबके लिए अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इनके जो नोट्स वगैरह हैं वो सारे अवेलेबल हैं. एंड देन टॉम मिचेल हिमसेल्फ जिनकी हम बुक भी फॉलो कर रहे हैं, उनके बुक और लेक्चर्स को हम काफ़ी फॉलो कर रहे होंगे. देन देर आर बंच ऑफ लिंक्स हियर फ्रॉम वेरियस प्लेसेस जिन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी एक्सप्लेन की हुई हैं, तो उन चीज़ों की डिटेल में बाय ऑल मीन्स आप लोग अपने तौर पर जाएं. देन आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक Dr. Ali Ahmed, who's my friend at the Information Technology University, and he's an amazing professor of machine learning among other things. तो उन्होंने भी इन slides में जहाँ हम Bayes optimal classifier की बात करेंगे, he actually helped me develop those slides. तो a special thanks to him. ठीक है जी, so let's move on. All right, so अब तक हम लोग बात करते रहे हैं हाइपोथेसिस स्पेसिस की, और हम डिफाइन करते रहे हैं कि अगर आपको याद हो बहुत शुरू से हमने ये डिफाइन किया था कि हाइपोथेसिस इज एसेंशियली अ फंक्शन, a mapping between your inputs, your features, so x1 to xn, and the labels जो कि आपकी outputs हैं, so y1 to yn. ये इनके बीच में एक मैपिंग है. It's just a function that creates that mapping. और regression के अंदर हमने ये देखा था कि हम ये मैपिंग करने के लिए पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जिनको हम वेट्स भी कह सकते हैं. सो W1 to WN या θ1 to θn, ये हमने वेट्स यूज़ किए थे. एंड देन इफ़ यू रिमेंबर रिग्रेशन के अंदर हमने इनको ऑप्टिमाइज़ किया था और वो बेस्ट सेट ऑफ वेट्स ढूंढ लिए थे जो हमें मिनिमल एरर दे सकते हों ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ दीज y1 to yn. सो जो आपका वेक्टर y है, जो लेबल वेक्टर है, इसको प्रिडिक्ट करने का एरर आप मिनिमाइज कर रहे थे, राइट? दैट वाज व्हाट यू वर एसेंशियली डूइंग. सो यू हैड योर इनपुट्स, you multiply them with these weights, so your thetas are essentially your parameters here, and in the output you get these y's. ये आपकी hope है, लेकिन essentially जो चीज़ आपको मिलती है are the estimates of y, और आप फिर ये देखते हैं कि कितनी दफ़ा इसने गलती की है और कोई loss function define करते हैं जो कि quantify कर सके उस error को. Same goes for a more practical example, spam versus not spam. आपने ये कई फॉर्म में इसको भी देखा है. सिमिलरली आप सेंटिमेंट के ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत काम देखते रहे हैं. तो जो लेबल आपके हैं, so y1 to n, so you predict those labels here and then you calculate some kind of a loss to figure out कि कितनी आपने उसके ऊपर गलती की है. तो हाइपोथेसिस इसेंशली जब हमने इस टर्म को यूज़ करना शुरू किया था तो हमारा उससे मतलब जो था वो सिर्फ ये फंक्शंस थे. सो इट्स द स्पेस ऑफ हाइपोथेसिस. अगर आपको याद हो हमने उस वक्त कहा था कि हम हाइपोथेसिस स्पेस को किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हैं. लाइक वन हाइपोथेसिस स्पेस कुड बी all types of hypotheses across all the various kinds of your machine learning models, but more realistically we usually define it, for example, for
on a regression side, or for example a particular hypothesis space, it could be the space of all possible combinations over all possible values of this theta 1 to theta n. So theta 1 ki sari values, and then theta 2 ki sari possible values, and then theta 3 ki sari possible values. So essentially when you were doing your gradient descent, you were just trying to search through that hypothesis space in search of that one hypothesis h, small h, that minimizes your error, राइट तो ये आप एसेंशली अब तक काम कर रहे थे. सो आपका हाइपोथेसिस स्पेस अगर आप गौर करें तो फिर ये डिफाइन कर क्या रहा है. योर होल हाइपोथेसिस इज रिलाइंग ऑन दीज थेटास, राइट. ये थेटास ही तो हैं जो कि आपकी पूरी की पूरे फंक्शन की मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं. सो द फंक्शन इटसेल्फ इज एसेंशली डिफाइंड बाय दीज पैरामीटर्स. सो योर हाइपोथेसिस स्पेस इज एसेंशली अ पैरामीट्रिक फैमिली. So for example, if in this one particular family of parameters जिसको इस तरह से आपने डिफाइन किया हुआ है, इस केस में वो n parameters हैं इस एग्जांपल के अंदर, तो उन n parameters के ऊपर डिफाइन हुई हुई एक पैरामीट्रिक फैमिली इज वन हाइपोथेसिस स्पेस. अनदर फॉर एग्जांपल गाउसियंस के ऊपर अगर आपकी आप पैरामीट्रिक फैमिली को देख रहे होते हैं तो उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, उसका मीन होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन होती है. सिमिलरली अगर आप जो है वो फ्लिप्स ऑफ कॉइन देख रहे हैं या सीक्वेंस ऑफ फ्लिप्स देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ हेड्स फॉर एग्जांपल x आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में आपका एक ही पैरामीटर होता है जो आपकी लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होता है. हम हेड को सक्सेस कह देते हैं और हम ये कह देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो एक खास वैल्यू है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स could always be inferred from the probability of heads. Just 1 minus probability of heads is the probability of tails. So hypothesis space को parameters के अंदाज में parametric families के एतबार से देखना, ये एक अंदाज था जिसमें हमने हाइपो देखा है. एक और अंदाज जो हाइपोथेसिस को देखने का है वो है कि हम इसको एक रैंडम वेरिएबल समझें. अब ये वो चीज़ है जो कि हम करते रहे जब थ्रू आउट, स्पेशली जब हम बेजियन थिंकिंग में आए, हम करते रहे लेकिन एक्सप्लिसिटली हमने इस बात का जिक्र नहीं किया. सो व्हाट वी मीन बाय दैट इज दैट नाउ योर हाइपोथेसिस could be a variable that can take on any values. Sorry, there is a typo here. So that can take on any value from a set of values जिसको हम इसका sample space कहते हैं, randomly with some probability. So for example आपके पास आपने अभी तक जो so and each of those labels occur with certain probability. अब थोड़ा मैं इसको practical करता हूँ तो आपको अभी इसकी example जहन में आ जाएगी. For example आपने एक फेयर डाई है आपके पास और आप उसको एक दफ़ा फेंकते हैं. So now in this case you have these 6 possible outcomes. For example मैं अपने x को अपने random variable को define करता हूँ कि it's the score shown on the top face. So इस sample space के अंदर मेरे पास फिर 6 चीज़ें आ जाएंगी, 6 possible outcomes हैं, 1 2 3 4 5 6, and the probability of x being let's say 1, अगर ये fair die है तो 1/6 होगा. So this is the probability mass associated with this outcome x is equal to 1, and the same random variable x can take on a value 2 or 3 or 4 or 5 or 6, and in this case because it's fair in all those cases the probability of x taking on those values would again be 1/6, right. अब अगर थोड़ा सा आप मैप करना शुरू करें उन प्रॉब्लम्स पे जिन पे आप काम करते रहे हैं, सो आपको याद होगा आपने स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम को देखा था. अब ये रैंडम वेरिएबल दो वैल्यूज ले रहा है, अब आप स्पैम नॉट स्पैम कह लें या उसको दो न्यूमेरिक वैल्यूज दे लें, +1 -1 या 0 1, and then you have a certain probability associated with each of those outcomes, कि probability of spam versus probability of not spam and so on and so forth. और इसमें आपने priors भी देखे थे, posteriors भी देखे थे. So your hypothesis h is now essentially a random variable. The probability that h takes on the value spam, और अगर आप याद करें आपने ये वाली चीज़ भी बड़ी तफसील से देखी है जिस वक्त आप मैप वगैरह कर रहे थे, तो उसमें आप ये देखते थे कि एज की कौन सी वैल्यू मैं सेट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम पोस्टीरियर मिलेगा, मैक्सिमम आउटकम मिल रही होगी, और वो एज की वैल्यू जो है उसको आप एज मैप कह देते थे. सो इसेंशली ये डिस्क्रिप्शन थी, अगर मैं यहाँ इसको ऊपर लिखूँ, सो एज मैप के अंदर जो आप काम कर रहे थे कि आप बेसिकली यू वर डिफाइनिंग एन argmax of your hypothesis h given your data, right. और इसको आपने फिर बेस से सॉल्व किया था the probability of data given hypothesis कि अगर मैं assume करूं कि hypothesis fixed है, तो इस तमाम चीज़ों में आप एक assumption ले रहे होते थे कि this h could be h map could be spam or not spam,
और वो जो भी चीज़ यहाँ पुट करेंगे, आप स्पैम पुट करेंगे या नॉट स्पैम पुट करेंगे इस जगह के ऊपर, जिस भी केस में आपको मैक्सिमम पोस्टीरियर जिस मिल रहा होगा जिस आर्ग्यूमेंट के केस में, वो आप यहाँ पर निकाल लेंगे, राइट? सो वी वर essentially considering this age as a random variable that can take on various values, various predefined values randomly with some probability, right? Similarly, अगर हम एक और example लें random variable की, number of heads, for example, when we toss 3 coins. So x को मैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ कि द नंबर ऑफ हेड्स. सो क्या क्या हो सकते हैं 3 कॉइन टॉसेस में? हो सकता है एक भी हेड ना आए, 0 हो सकता है, एक हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है 3 हेड आ जाए. और इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? यू कैन ऑलवेज क्रिएट दोज कॉम्बिनेशंस एंड यू विल फाइंड कि 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो यू कैन हैव लाइक योर हेड 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 एंड हेड हेड टेल एंड हेड टेल हेड एंड हेड टेल टेल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उनमें से एक ऐसा है जिसमें आपके पास 3 हेड आ रहे हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं, सॉरी 2 ऐसे हैं जिसमें सॉरी आपके 2 हेड आने की जो है प्रोबेबिलिटी वो 3 out of 8 है. 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आपके पास 2 हेड हैं, and so on for the other ones, right? You get the idea, and you can even try to do it on your own. This is I think just a very basic revision of कि वो random variable होता है क्या. आप लोगों ने obviously ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन in our context a second view of this hypothesis H can be when you consider it as a random variable. So in our hypothesis, in our case जो हमने अभी तक देखा है कि there are a set of probabilities associated with each label, so which is the sample space essentially, spam, not spam, heads, tails, positive, negative, neutral, and so on and so forth. So the hypothesis space H over such hypotheses, ये जिस किस्म की हमने ऊपर देखी हैं, will contain all possible probability mass functions defined over the same sample space. What we mean by that is कि अगर आप ये देखें तो essentially जब आप spam not spam का काम कर रहे थे, let's say मैं ये कहता हूँ spam versus not spam का आप जिस वक्त देख रहे थे, not spam, तो इस केस में आप क्या कर रहे थे? You just wanted to figure out a probability which is associated with this and a probability which is associated with this. So you were just trying to figure out these two probabilities. You were essentially trying to figure out this probability mass function that assigns a probability mass here and assigns some probability mass here, right? So you were navigating through the possible probability mass functions and finding out the best one that basically maximizes your output, that maximizes this H map, right? यही चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी. तो अब मैं सिर्फ ये वाज़े इस वजह से कर रहा हूँ कि there is a confusion amongst our class as well, और ये it's a very natural confusion कि एज के बारे में हम अलग अलग तरह की बातें करते हैं. कभी हम एज को स्पैम नॉट स्पैम कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि ये एक पैरामीटर है या पैरामीटर्स हैं जिसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कभी हम ये कहते हैं कि या एरर मिनिमाइज कर रहे हैं, कभी हम ये कहते हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटीज़ हैं. तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए कि वी कैन थिंक ऑफ दिस एज एज आइदर the capital H as a parametric family, or we can think of this capital H as a random variable containing all the possible probability mass functions for a particular random variable. ठीक है? So when we define H, we may mean any of these two definitions. It could be, for example, for discriminative algorithms and for MLE-based frequentist estimations. और अभी हम इसको थोड़ा सा और तफसील से भी देखेंगे. इन तमाम केसेस के अंदर जो आपका H है वो यूजुअली एक सेट ऑफ पैरामीटर्स होगा, जैसे कि अभी हम देख कर आए हैं. सो थीटा 1 टू थीटा n आपके कोई पैरामीटर्स होंगे, या लेट्स से कुछ भी पैरामीटर्स आपके होंगे, और वो पैरामीटर्स को आप किसी तरह से बेस्ट फिट करना चाह रहे होंगे अपने एरर फंक्शन के अंदर. एंड सिमिलरली in case of Bayesians, when we deal with the Bayesian way of learning or Bayesian way of predicting, हम अपने प्रायर्स को डिफाइन करेंगे एज के ऊपर, और सिमिलरली पोस्टीरियर्स भी इस पे डिफाइन होंगे. तो लिहाजा व्हेन you need to define a probability distribution, then this cannot be a parameter, then it needs to be a random variable. So लिहाजा इस पर्टिकुलर थिंकिंग के अंदर हम इसको एक रैंडम वेरिएबल के तौर पे डील कर रहे होंगे. लेकिन इवन विद इन बेजियन आप ये देखेंगे कि इस हाइपोथेसिस से कभी हमारा मतलब एक एग्जैक्ट लेबल होगा, और वो जिस पर हम मैप करके उसे निकाल रहे होंगे, मैक्सिमम पोस्टीरियोरी करके निकाल रहे होंगे, और कभी हमारा मतलब खुद वो पूरा का पूरा रैंडम वेरिएबल और एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन होगा कि लेट्स से जिसमें स्पैम की क्या प्रोबेबिलिटी है और लेट्स से नॉट स्पैम की क्या प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन. ठीक है? तो एक तो चीज़ ये क्लियर करनी थी कि आपके जहन में हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट